patterns, right? I'll tell you at the end of the video on which page number you will get this lecture on your book, right? But on your book there is nothing like worksheets and study material, so I have prepared slides by myself, right? So worksheet number 1 we have is, what is symmetry? What is symmetry? Since the name of the topic is symmetry and patterns, so the first question is, what is symmetry? Symmetry means that one shape becomes exactly like another. ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई एक शेप बिल्कुल दूसरी शेप की तरह बन जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सर्कल. ठीक है, वी हैव अ सर्कल. अगर हम उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों साइड पे जो शेप्स हैं वो एक जैसी हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ हार्ट. ठीक है, हार्ट. तो जब हार्ट को भी हम सेंटर में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड्स पे हमारे पास एक जैसी शेप्स आ जाती हैं. ठीक है, सो दैट शेप्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स. ठीक है, जो कि दोनों एक जैसी शेप्स होती हैं. आई विल शो यू द वीडियो. ठीक है, देन व्हाट इज अ पैटर्न? हमने कल भी पढ़ा था. समथिंग दैट हैपेंस इन अ रेगुलर एंड रिपीटेड वे इज कॉल्ड अ पैटर्न. ठीक है, कोई भी चीज जो एक रेगुलर वे में यानी कि एक तरतीब के साथ और रिपीटेड वे में बार बार रिपीट होती है, ठीक है, तो उस पैटर्न, उस वे को हम कहते हैं कि वो एक पैटर्न है. ठीक है, नो आई विल शो यू द वीडियो ऑफ सिमेट्री. ठीक है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. We're in line to ride the Ferris wheel, a circular shape made out of steel. Before we ride, we try to decide where a circle's lines of symmetry hide. Lines to the center have symmetry, so each circle has infinity. Each line, upon further inspection, creates a perfect mirror reflection. Everywhere we look, we see lines of symmetry. Lines of pirate ship, we wait our turn. This ride can make our stomachs churn. A line from the axle to the ground is one line of symmetry to be found. Identical parts facing each other have symmetry with one another. Lines of symmetry evenly divide. Let's find symmetry on every ride. everywhere we look, we see lines of symmetry. Lines of symmetry. Symmetry. Lines of symmetry. Yeah, yeah, yeah. We see the roller coasters loop-de-loop has a line of symmetry between the hoop. A mirror reflection on each side is where the lines of symmetry hide. Then we see a mirror and realize symmetry disguised right between our eyes. A line divides each side of our face. We see symmetry all over the place. Everywhere we look, we see lines of symmetry. Everywhere lines of symmetry. Everywhere. Lines of symmetry. Lines of symmetry. It's time for lunch and we've got a hunch that symmetry's in the food we'll munch. We look at a cracker, it's a square. We see 4 lines of symmetry there. To the 4 corners, they were gone, leaving us with a cracker octagon. We looked a bit closer then to see the regular octagon's 8 lines of symmetry. Everywhere we look, Everywhere we look, we see lines of symmetry. Everywhere lines of symmetry. Everywhere we look, we see lines of symmetry. Everywhere lines of symmetry. Everywhere we look. Visit numberrock.com for exclusive. बस चीज थी whether it was a circle, square,
ठीक है, triangle, rectangle, a heart shape, even a girl and a boy, anything, any object, any person, ठीक है। जब उसको सेंटर में से दो एक लाइन से उसको हमने डिवाइड कर दिया तो व्हाट डू वी गेट, हमने देखा कि दोनों साइड्स में हमारे पास एक जैसी शेप्स आई हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हमारे पास शेप्स डिवाइड हो जाए तो हम उनको कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल शेप है, दोनों एक जैसी शेप्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू definitions of worksheet number 1 which you have to learn and write on your neat copies as well. Okay, this is your worksheet number 2. Tell whether the dotted line on each letter represents a line of symmetry. Write yes or no. ठीक है, आपके पास मैंने खुद से आंसर्स जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। एंड यू आर गिवन फ्यू अल्फाबेट्स, ठीक है। उन अल्फाबेट्स में आपने ये चेक करना है कि वेदर अगर हम लाइन ड्रॉ करें कहीं से भी एट देयर सेंटर तो क्या वो सिमेट्रिकल फिगर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। एज यू कैन सी this A. When we draw a line at the center of the A, both of the sides of A are same now. It means this is a symmetrical shape. So the answer is yes. Next we have B. When we divide B at the center, we get the same figures at the both sides of this line. So this is also a symmetrical shape. Then we have C. We divided C at both sides of at the center. So now is this a symmetrical shape? Now this is D. Now tell me, is this a symmetrical shape? This is E. This is K, right? So now I'm going to show you a video whether which alphabets are symmetrical and which alphabets are not symmetrical, right? All these shapes can be folded in half such that one half of the shape fits exactly on top of the other. Such shapes are said to be symmetrical. And the fold so formed is called the line of symmetry. As each of the shapes have a line of symmetry, we can also see that the shapes have line symmetry.
and it showed all the alphabets whether are they symmetrical or non symmetrical. ठीक है, अच्छा अब इसके लिए you have to remember that it's not necessary कि जो भी शेप है आपने उसके बस सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे उसकी लाइन ड्रॉ करें तो इट शुड गिव यू अ सिमेट्री एट बोथ साइड्स. ठीक है, जिस तरह से ओ है, हम ओ ले लेते हैं. ओ को जिस तरह आपने भी देखा, हम 2-3 साइड्स पे हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, इवन हम मल्टीपल साइड से उसको अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो इट विल गिव द सेम शेप एट बोथ साइड्स. ठीक है, so these are called symmetrical shapes के example है, and we discussed the symmetry in alphabets, right? So these are the alphabets which are symmetrical, and these are the alphabets which are not symmetrical, right? Like F है, F में आप wherever you draw a line, it will not give you the same figure at both sides of the line. Same is the case with this G, right? Same is the case with J. Also, you cannot divide L into two parts by separating a line. ठीक है, then we have N. N को भी आप separate नहीं कर सकते. You can separate M. ठीक है, M has a line of symmetry but N does not have a line of symmetry. Similar is P, Q, R, S and Z. All these alphabets are non-symmetrical. So since the topic of our today's lesson is symmetry and patterns we have already discussed yesterday, but we will have a short revision of pattern as well. So here is a worksheet of pattern. Complete the pattern. Look at each pattern below and then use the box to write you on the right to complete the pattern. ठीक है, this is a simple pattern like we did yesterday. ठीक है, पैटर्न में हम क्या करते थे कि एक रेगुलर और एक रिपीटेड वे होता है. ठीक है, रेगुलर मीन्स के एक तरतीब से चलने वाला, और रिपीटेड मतलब दोबारा दोबारा उसमें वो चीजें रिपीट होती हैं. ठीक है, लाइक दिस इज वी हैव अ स्क्वायर, a circle, then we have a square, a circle, then square, then what will come? A circle, right? So secondly, we have a circle, then we have two diamonds, right? Then we have one circle. What will come next? One diamond is here, we will draw another diamond. These three I have left for you as your homework, but still we will discuss it. We have a square, then triangle, then circle. Then what will come next? A square, a triangle, again here will come a circle. Similarly, we have a diamond and two circles. What will come next? A diamond, one circle is given, and here will also come a circle. Lastly, we have two triangles and one circle. Then we have two triangles. What should come next? A circle, right? So this is your homework, the remaining ones. Now listen very carefully what you have to do. You have to write this worksheet number 1, which has two questions: what is symmetry and what is pattern, on your neat copies in neat and illegible handwriting. Clear? Then you will uh, copy this worksheet as well on your neat copies. Okay, you will write the question, tell whether the dotted line on each letter represents a line of symmetry. Write yes or no. ठीक है, so आपने सारे अल्फाबेट्स लिखने हैं, लाइक ए, नेक्स्ट लाइन में आप लिखें बी, नेक्स्ट में सी, डी, ई, इस तरह से एक लाइन में एक एक अल्फाबेट लिखें और उसके आगे आप लिखें यस. फिर ये वाले आप सारे अल्फाबेट्स लिखेंगे. ठीक है, वन अल्फाबेट ऑन ईच लाइन, और उसके आगे आप आंसर लिखेंगे नो. ठीक है, ओके. एंड ऑल्सो दिस वन यू विल कॉपी ऑन योर नीट कॉपीज. ठीक है, इस तरह से जिस तरह मैंने ये दो आपको शेप्स बना दी हैं, बाकी रेस्ट ऑफ 3 यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, चूज अ कलर, एज आई टोल्ड यू yesterday, चूज अ स्पेसिफिक कलर फॉर आंसर. ठीक है, आंसर के लिए आप कोई स्पेसिफिक कलर चूज कर लें और उस आपने जो आंसर वाली शेप है उसको उसी कलर से आपने फिल करना है. ठीक है, सो दीज आर 3 वर्कशीट्स यू कैन से, और 3 pages which you have to write on your neat copies for today. Now I'm going to stop sharing my screen.